وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We begin from verse number 69 of Surah Yusuf. In the last class, we had seen how the brothers finally convinced Yaqub al-Islam to let them take Binyamin along with them to Egypt to get an additional camel's load of provisions. ऊन भर गल्ला का इजाफा हासिल करने के लिए उन्होंने अपने अब्बा जान को यानी याकूब अलैहिस्सलाम को कैसे भी मनवा लिया और फिर यूसुफ बिन्यामीन को अपने साथ ले जाते हैं। जाने से पहले याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको ताकीद करते हैं कि तुम एक दरवाजे से दाखिल मत हो बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों में दाखिल हो ताकि जो है नजर बद ना लगे और तुमको जो है खामखा परेशानी उठाने ना पड़े। तो बच्चों ने ऐसे ही अमल किया, लेकिन फिर भी याकूब अलैहिस्सलाम बाद में फिर कहते हैं कि जो कुछ एहतियात लिया जा रहा है अल्लाह के फैसले के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं। एहतियात लेना हमारा काम है, फिर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल करते हैं और उसका जो भी फैसला होता है हम उस पर राजी भी होंगे। We will take all precautions and leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala, for none of our precautions can be of any use if Allah has decided otherwise. But we accept the verdict of Allah, whatever should be the outcome. However, as far as we humans are concerned, we can only use our intellect and take precautions to the maximum extent, but ultimately it's only Allah subhanahu wa ta'ala who finally decides everything. Up to there we had completed, now we proceed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. And when they entered before Yusuf alayhi salam, he took towards him his brother and said, took to him his brother. Yusuf alayhi salam said, verily I am your brother, ana akhuka, I am your brother, fala tabtais, so do not grieve with what they used to do. और जब वो दाखिल हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने, उसने ले लिया अपनी तरफ अपने भाई को, कहा बेशक मैं तेरा भाई हूँ, बस ना तू गमगीन होना इस पर जो वो करते थे यानी सुलूक करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम immediately recognized Binyamin and took him and kept him with him and silently told Binyamin, do not reveal that I am your brother and I am the Aziz. Don't reveal this. Your difficult days now have come to an end. You are now in safe hands. So don't worry about anything and forget the past, whatever mischief and wickedness they did with you. Just forget all that. It's all a matter of the past. Now you are in safe hands, so do not bother about them anymore. And neither reveal to them that I am the Aziz and I am their brother. तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को कहा कि मैं तेरा भाई हूँ, लेकिन तू ये राज की बात जो मैं तुझसे कहता हूँ भाइयों के सामने नहीं कहना कि मैं ही अजीज हूँ और मैं ही उनका भाई हूँ। और जो कुछ माजी में हो चुका सो हो चुका, अब तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे गम के दिन खत्म हो गए, अब तुम मेरे साथ रहोगे और तुमको मैं पूरा तुम्हारी हिफाजत करूंगा और तुम्हारी बेहतरीन मेहमान नवाजी भी करूंगा। This is all the details which Yusuf al-Islam conveys to his brother Binyamin. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Then when he furnished them with their provisions, Yusuf al-Islam put the drinking cup fi rahli akhihi, in the bag of his brother. Summa muazzana muazzinun, then called out a caller, ayyatuhal ir, O you who are in the caravan, innakum lasarikhun, verily you surely are
thieves. They said while they turned to them, Madha tafkidun, what is it you have lost? They said, we have lost the bowl of the king, and for the one who brings it shall have a camel's load of provision. Wana bihi zaim, and I shall be with it stand surety, or I shall be with it responsible. फिर जब उसने उनको भरकर दे दिया उनके सामान, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डाल दिया पानी का प्याला उसके भाई के बोरिए में। फिर पुकारा एक पुकारने वाला, ए काफिले वालों, बेशक तुम जरूर चोर हो। उन्होंने कहा पलटते हुए उनकी तरफ, क्या खो गया है तुमसे? उन्होंने कहा, हमसे खो गया है बादशाह का प्याला, और जो कोई ले आएगा उसको ऊन भर गल्ला मिलेगा और मैं उस पर जामिन हूँ। खालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जीना लिनुफ़सिदा फ़िल अर्ज़ि वमा कुन्ना सारिक़ीन। खालू फमा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन। खालू जज़ाउहु मन वुजिदा फ़ी रहलिही फ़हुवा जज़ाउहु कज़ालिका नज्ज़िज़ ज़ालिमीन। They said, by Allah, certainly you know, ma jina linufsida fil arz. Certainly you know, not we have come to spread corruption in the land. Wama kunna sariqin, and neither we are thieves. They said, then what is its recompense if you are liars? They said, its recompense with whom is found in his bag, fahuwa jazahu, then he only will be its recompense. Thus we recompense the zalimin, wrongdoers. भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, यकीनन तुम जानते हो, नहीं हम आए कि फसाद मचाए जमीन में, और ना ही हैं हम चोर। यूसुफ के खादिमों ने पूछा, फिर क्या जजा होगा उसका अगर हो तुम, या क्या बदला होगा उसका अगर हो तुम झूठे? उन्होंने कहा, उसका बदला कि जिसके पास पाया जाए उसके बोरिए में, तो वही उसकी सजा होगी। इसी तरह हम सजा देते हैं जालिमों को, या बदला देते हैं जालिमों को। तो भाइयों का जो है ये स्टेटमेंट होता है कि देखो, हम तुम्हारे इस शहर को आए हैं, ना हम फसाद मचाने के लिए आए हैं जमीन में, और ना ही हम चोर। सवाल अब ये पूछा जाता है, अगर तुम्हारे बोरियों में से किसी के बोरिए से ये प्याला निकल आया, तो फिर क्या है उसकी सजा आपके कानून के मुताबिक? क्योंकि इनको मालूम था कि ये भाइयां हैं याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरा पता था, और याकूब अलैहिस्सलाम एक नबी थे, और जो इनके भाइयों का जो जवाब होगा वो शरीयत के कानून के मुताबिक होगा, इसलिए कि वो याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत की इत्तिबा करने वाले, और याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत कानून चोरी के मामले में क्या था, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हासिल करना चाहते थे। और याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम का, और इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत को फॉलो करते थे। तो जब उनसे पूछा गया, then what is its recompense? They said, that is, the brothers said, who were the sons of Yaqub alayhi salam? Yaqub alayhi salam is a prophet. Obviously, the answer or response they would give would be based on the Sharia law followed by Yaqub alayhi salam being a prophet, and therefore that will be the right way forward. So Yusuf alayhi salam puts back that question to them itself and says, for argument's sake, suppose you turn out to be liars and the cup comes out of your bag, then what is the punishment for this? So they relate now the punishment according to the law of the Islamic law of Sharia, saying
that suppose it is found in somebody's bag, then that particular person will have to serve as a slave to the victim of the theft. जिससे चोरी जिससे चोरी की गई, अब ये शख्स जिसके बोरिए से अगर प्याला निकला तो उसका गुलाम बनकर खिदमत करना पड़ेगा या उसके पास रोक लिया जाएगा. फबदा बिऔइयतिहिम क़ब्ल विआइ अखीहि सुम्मा इस्तखरजहा मिन विआइ अखीहि कज़ालिका किदना लियूसुफ मा काना लियाखुज़ अखाहु फी दीनिल मलिक इल्ला अन यशा अल्लाह नरफ़उ दरजाति मन नशा व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ, then he began their search before the search of his brother. ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا, then ultimately he brought it out from the bag of his brother. كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف, thus we planned for Yusuf. Not he could take Akhahu, his brother, as per the law of the king, except that willed Allah. Narfa'u darajatim man nasha, we raise in ranks whomever we wish. Wa fawqa kulli zi ilmin alim, and above every knowledgeable person is the all-knower. फिर उसने तलाशी शुरू कर दी उनके बोरियों में, इससे पहले कि उसके भाई के बोरिए से. फिर आखिर निकलवाया उसको या निकाला उसको उसके भाई के बोरिए में से. इसी तरह हम तदबीर किए यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, नहीं वो ले सकता था उसके भाई को बादशाह के कानून के मुताबिक सिवाय के चाहे अल्लाह. नरफ़उ दराजात मन नशा, हम बुलंद करते हैं दर्जात जिसके हम चाहते हैं, और हर इल्म वाले के ऊपर एक बड़ा इल्म वाला है यानी अल्लाह. See how much of care Yusuf alayhi has taken, because the land of Egypt and the law and the land of the king has still not got transformed into an Islamic system of governance. अभी जो है मिस्र का वो जो शहर था, अभी दीन के कानून के मुताबिक अमल में नहीं आया था. If Yusuf al-Islam wanted, he could have exercised the law of the land because he was holding so much of power. But Yusuf al-Islam himself being a Muslim did not find it right to use the law of the land, and he wanted to implement the Islamic Sharia law until the Islamic system of governance would ultimately be established. This is again a very important point and a lesson for you and I. Unfortunately, we Muslims who live in a country where the legislature and the legal system is based on batil, and we know pretty well, the moment there is any issue, even between the Muslims, they rush to this batil system, to the batil legal system, to seek redressal for their grievance or to seek the verdicts from the batil system of governance or a batil legal system, which is very unfortunate. What is very, very important is that when it comes to any issues between the Muslims, then in the best interest of their faith, and as per the Islamic ruling, they should try to find a solution within the Islamic Sharia framework. Take the matter to a learned scholar, present their cases before the scholar, and give the full liberty to the scholar to give the verdict on the basis of the knowledge which he possesses of the Quran
of the hadith and the fiqh. And that verdict should be wholeheartedly accepted. This is the right method of approach. But unfortunately, it doesn't happen that way. We are so hasty, we become so desperate, and we undermine the Islamic system of the rulings on all these issues and immediately rush to the batil system of the legislature and wish to seek grievances over there. Very, very unfortunate, but the reality of the matter is you will find so many Muslims, particularly the Muslim women as well, running from pillar to post in the high courts, seeking redressal for their issues and problems, 99% confronting or encountering with the Muslims themselves. You'll find the Muslim women there in the family courts, demanding their rights, demanding compensations from their Muslim husbands who would have divorced them. And you know who's taken up the case? The non-Muslim advocates. And you know who's going to deliver the verdict? A non-Muslim judge. And on what basis are they going to give the verdict? On the batil system or batil legal system. How sad, how unfortunate. When we have been told very clearly to reject it altogether. And this verse you will find in Surah Nisa. हालांकि हुक्म ये दिया गया है कि इस बातिल और तागुत सिस्टम को पूरी तरह से जो है इनकार करे और अपना मामला इस्लामी शरीयत के कानून के मुताबिक इसका जो है फैसला हासिल करे, ना कि जो है बातिल और तागुत के जरिए से. And this is a very important lesson that you and I get. Okay, maybe if the matter is with a non-Muslim, then it is also better to seek advice from some scholar before proceeding. But when it comes to an issue between the Muslims, within the Muslim community, then going to a batil system for seeking redressal is absolutely wrong. It will be regarded an act of hypocrisy. As per the verse of Surah Nisa, as I said earlier. And in order to safeguard our Iman, see, Iman does not just comprise of Salah, Saum, Zakat, Hajj. No, that's only one part of Islam. As I explained to you also, when Yusuf al-Islam conveyed the message of Islam to one of those prison inmates, what did he say? Inil hukmu illa lillah, not is sovereignty except for Allah. शरीयत के जो क़वानीन हैं वो दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. लेकिन अगर हम सिर्फ इबादत के मामले में मुसलमान रहे और शरीयत के क़वानीन के मुताबिक हम नहीं अमल करें तो हमारी नमाज भी बेकार, हमारी इबादत भी बेकार. इबादत और क़वानीन शरीयत के ये दोनों मिलकर जो है इस्लाम का पूरा जो है स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं. एक पार्ट ऑफ द इस्लामिक स्ट्रक्चर हम एस्टैब्लिश करें और दूसरे पार्ट को जो है अगर हम डिमोलिश करें तो फिर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा. तो फिर बकिया जो है जो स्ट्रक्चर भी बना हुआ वो भी जो है एज गुड एज ऑफ नो यूज, will not be considered at all. So this is a very important message that you and I get out of this. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. They said, who said? The brothers of Yusuf al-Islam said, if he has stolen, then indeed had stolen a brother of his from before. فَسَرَّهَ Yusuf, but hid it Yusuf fi nafsihi in his heart. وَلَمْ يُبْدِيهَا لَهُمْ, and not he disclosed it to them. Yusuf al-Islam said, Antum sharrum makana, you are in the worst position. And Allah knows best of what you describe. भाइयों ने कहा अगर इसने चोरी की है तो यकीनन चोरी कर चुका उसका भाई भी इससे पहले, लेकिन छुपा लिया इसको यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने दिल में और नहीं जाहिर होने दिया उनके सामने. यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम बदतरीन मर्तबे पर हो और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम बयान करते हो. अब ये भाइयों के दिल में अभी कीना, अभी बुग़्ज़, अभी हसद, अभी दुश्मनी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में दिल से अभी नहीं मिटी.
इनके दिल अभी जो है करप्ट होकर ही रहे, और उनको ये पता भी नहीं कि किसके सामने ये शिकायत पेश कर रहे हैं या एक बोतान लगा रहे हैं। वो खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम ही हैं जिसके बारे में ये बयान कर रहे हैं। And they are trying to disown Binyamin altogether, and also disowning his brother Yusuf al-Islam. वो कहते हैं अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो क्या बड़ी बात है, इसका भाई भी इससे पहले चोरी कर चुका। हमारा भाई बोल सकते थे, लेकिन इसका भाई ने इससे पहले भी चोरी कर चुका है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दोनों भी चोरी हैं असल में। नौजुबिल्लाह। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम दंग रह जाते हैं और यह गम का घूंट पीते हैं और अपने दिल में इस गम को पी लेते हैं और अपने दिल के अंदर इसको मख्फी रखते हैं, और नहीं अभी अपनी आइडेंटिटी उनके सामने रिवील करना चाहते हैं। बस इतना इनके मुंह से निकलता है, तुम्हारी कितनी बुरी आदतें हैं, अंतुम शर्रु मकाना, यू आर इन द वर्स्ट पोजीशन, मींस योर कैरेक्टर इज सो बैड, giving them a indirect message that what they are speaking is absolutely blasphemous, absolutely a lie, and Allah only is the witness. Still that malice, still that hatred, still that hostility, still that enmity, and still that jealousy against Yusuf al-Islam has not yet gone, even after so many years, almost 40 years. And they are totally disowning Binyamin and totally disowning Yusuf al-Islam as well, and saying, if he has stolen, what is the big deal? There was a brother of his who also had stolen from before. Absolute slander. Yusuf al-Islam was only 7 years old when they just threw him into the well. Where's the question of him stealing anything? These are the fellows who were the mischief makers. These were the fellows who were the sinners. These were the fellows who were at fault altogether, squarely. But they try to accuse Yusuf al-Islam, and that too they are telling all this in front of actual Yusuf al-Islam itself. Imagine the state of Yusuf al-Islam at that point of time. But he suppressed his grief and he would not reveal it to them. He only said, you fellows are worthless. Nobody can talk to you. You are gone beyond a level of decent conversation. And Allah only knows best of what all you are speaking. एक वक्त हसद को अपने दिल में जगह दे दिए ना, तो मरते दम तक ये हसद तुम्हारी आदत बनकर रह जाएगी और नहीं छोड़ेगी. Once you give space to this jealousy, malice and hatred in your hearts, and do not clean up your hearts from time to time, and if this condemnable diseases of the heart, which can ruin a person's character altogether, in the bargain ruin his faith and ruin his hereafter, if it is not checked and eliminated from time to time, then it finds space and ultimately corrupts the heart altogether. That's exactly what happened. You and I also have seen several people who were jealous of others at one point of time, continue to remain jealous of people even now. And this particular disease does not leave them even until their death, because they did not check it and remove it the first time they became victims of this disease. They nurtured it, and finally it grew to an extent where it corrupted the heart altogether. And as I said, jealousy eats up the virtues just as how fire eats up wood. फिर जो भी नेकियां के खलास पूरे नेकियां को हसद जो है ऐसे खा लेता है. And when do you feel jealous of somebody? When do you feel jealous of somebody? You feel jealous of somebody when you find that person possessing things better than what you have. Better car, a better apartment, a better property, more wealth, better looks and personality, a better style of living.
then is where jealousy emerges. What are we supposed to do as true believers? Say, MashaAllah, let him live well, let him prosper. It's easy to say, it'll never come. It'll never come. Unless you are a righteous believer. Unless you are a righteous believer, it'll never come. किसी के भलाई और खैर में खुश होना ये कोई मामूली चीज नहीं है. इसके लिए जिगर चाहिए, जिगर. इसके लिए ईमान और तक़वा चाहिए. यूं ही नहीं आएगा. And when you're jealous of somebody, actually you're finding fault with Allah because only Allah gave him that, right? When you're being jealous of someone, means you're finding fault with Allah. जब तुम किसी से हसद करते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो है इल्जाम ठहरा रहे हो, क्योंकि अल्लाह ही ने उनको दिया ना. और जो चीज अल्लाह ने किसी को दिया, तुमको जो है क्या इख्तियार है, और what right you have to comment on it or feel jealous about it? In other words, you're saying, why did Allah give it to him? Why did not he give it to me? That means you're finding fault with Allah subhanahu wa ta'ala, who has the sole discretionary power to give how much to whom? ये अल्लाह का इख्तियार है, वो जिसको चाहे जितना चाहे देगा. जब तुम किसी से हसद कर रहे हो, गोया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तुम गलत ठहरा रहे हो. नऊजुबिल्लाह. ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में है, वो जिसको चाहे जितना चाहे दे. हमको उस जगह से निगाह हटा देना चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह ने उसको अच्छी चीजें दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इतना आसानी से नहीं आएगा, जैसा I said. Now the argument begins, or rather the debate and conversation begins, where now the brothers are trying to convince the Aziz, who is no other than Yusuf al-Islam, to take in place of Binyamin one of them, because they had taken a mawsiqam min Allah, a solemn covenant in the name of Allah, and handed over to Yaqub al-Islam. How these events unfold, how does this conversation go forward? Looking forward to, inshallah, to seeing you next week. Same time, very interesting part, particularly the end and the climax of this particular narrative of Yusuf al-Islam. Don't miss it. Do your homework, be on time. See, Ramzan is close. Try to develop some element of seriousness. Strengthen your relationship with the Quran and see what best you can prepare yourself mentally, emotionally, physically, and spiritually to welcome this glorious month, which is a month which guarantees forgiveness, delivery from hellfire, and success in this world and the hereafter. Take it seriously. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to attain this month, which is just around the corner. And may Allah subhanahu wa ta'ala help us to utilize this month in the best manner possible. For who knows whether this is going to be the last Ramzan of our life. May Allah provide us many, many Ramzans, but yet life and death is in the hand of Allah. Ameen. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.